हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट एंड इट्स इफेक्ट। नाउ सी, व्हेन यू स्टैंड इन ए सनलाइट और सिट नियर द फायर यू फील hot, or you touch a piece of ice you feel cold. Now we see the video of the lesson. When we stand in the sun or sit near a fire, we feel hot. When we touch a lump of ice, we feel cold. When we dip our finger in warm water, we feel warm. Thus, we feel cold, warm, or hot. Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. Heat and its effects. Heat cannot be seen by us. We feel the heat by the temperature effect it produces. When heat is given to a substance, its temperature increases and it becomes hot. On the other hand, when heat is taken out from a substance, its temperature decreases and it becomes cold. When you rub your hands together, your hands become warm. How does it happen? It happens because the mechanical energy gets converted into heat energy. Now see the students, when you touch a piece of ice you feel cold, and when you dip your fingers in warm water you feel warm. देखो, हम कोई हीट में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, कोई ठंडी चीज मीन्स आइस को हम टच करते हैं तो हमें कोल्डनेस फील होता है। वैसे ही अगर हम गर्म पानी के अंदर हमारे फिंगर्स को डीप करेंगे तो हमें वार्मनेस महसूस होगा। दिस इज ड्यू टू द हीट प्रेजेंट इन देम। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीट प्रेजेंट है। So heat is a form of energy that causes the sensation of hotness or coldness. तो heat एक one type of energy है जिससे हमें sensation होता है, जलन होती है या ठंडी महसूस होती है। So heat cannot be seen by us. देखो, heat हमें दिखाई देता नहीं है। We feel the heat by the temperature effect. तो हम कैसे महसूस करते हैं कि ये heat है? तो उसका temperature effect होता है। When heat is given to a substance, its temperature increase and it becomes hot. और another hand में क्या है कि heat is taken out, the substance, the temperature will decrease. अगर हम substance को heat में डालेंगे तो उसका temperature increase हो जाएगा, और अगर हम heat वो substance में निकाल देंगे तो उसका temperature decrease हो जाएगा. On the other hand, how does it happen? It happens because the mechanical energies get converted into heat energy. देखो, जो अगर हम हमारे hands को rub करेंगे तो हमारे हैंड्स के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और बहुत से प्रकार की एनर्जी है जिसे हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Many other forms of energy can also be converted into heat energy. For example, when coal is burnt, chemical energy stored in the coal gets converted into heat energy, which is used to produce electricity in thermal power stations. When we switch on an electric heater, electrical energy gets converted into heat energy. Heat energy can also be converted into other forms of energy. For example, the heat energy of burning petrol is converted into mechanical energy in a car. You know that energy is the capacity to do work, so heat must be able to perform work. For example, in your homes, you use heat for cooking food, ironing your clothes, heating water, etc. Heat is measured in joules or calories. SI unit of heat is joule. J. 1 kilojoule kJ is equal to 1000 joules J. 1 kilocalorie kcal is equal to 1000 calories cal. 1 cal is equal to 4.184. Now you see, nowadays the energy is used to produce electricity in thermal power. और आपको पता है कि अभी हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर में भी इस्तेमाल होती है। When we switch on an electric heater, the electrical energy is converted into heat energy. अगर हम कोई इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर है जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। और हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल,
heat of burning petrol is converted into mechanical energy in car. अगर हम heat energy को burning करेंगे, for example पेट्रोल को कार को ड्राई करने के लिए पेट्रोल से कार ड्राई करेंगे तो उसमें जो मैकेनिकल हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क. फॉर एग्जांपल इन आवर होम्स यू यूज heat for cooking food, ironing your clothes and heating water. So SI unit of heat is joules J, and 1 kilojoule means 1000 joules J, and 1 kilocalorie means 1000 calories, or 1 calco 4.8 to 4.184 joules. 4. Hot and cold. We know that some objects are hotter than the others, while some are colder than others. We often decide which object is hotter than the other by touching the objects. But is our sense of touch reliable? Let us find out. Activity 1. Take 3 bowls, mark them A, B and C. Pour some hot water in the bowl marked A, warm water by mixing some cold and hot water in the bowl marked B, and ice-cold water in the bowl marked C. Now, dip your fingers of your right hand in bowl A and the fingers of your left hand in bowl C for some time. Then, put both the hands simultaneously in bowl B. Do both of your hands get the same feeling? No. You feel cold on your right hand and hot on your left hand, though your hands are in the same bowl. Why is it so? A. Hot water, warm water, ice-cold water. B. The right hand tells that the water is cold and the left hand tells the same water is hot. Sense of touch is relative and not reliable. This is देखो बच्चों, hot और cold means we know that some objects are hotter than other while some are colder than other. देखो हमें पता है कि some objects है वो hotter होते हैं तो दूसरे colder होते हैं. मीन्स कोई objects hotter होता है, कोई objects colder होता है. तो हम इसको decide नहीं कर सकते कि कौन सा object hotter है या कौन सा colder है. तो उसको हमें touch करना पड़ता है. touch करने से ही हमें पता चलता है कि objects hot है या cold है. So now we will see the activities. Take 3 bowls and take 3 bowls A, B and C. Put some hot water in one bowl and put ice water in another bowl and put some warm water in another bowl. So you see that. Then dip the fingers in one bowl which you feel that hotness of that water, and other hand you dip in cold water, you feel coldness, and both the hands you dip in warm water, you feel heatness. Now we will see the next topic, because the temperature. sensation of touch is relative. When your hand comes from hot water to warm water, you feel water is cold, and when your hand comes from ice-cold water to warm water, you feel the same water is hot. So we conclude that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Temperature. We have just discussed that the hotness or coldness of a body is something relative. We can measure the degree of hotness or coldness by comparing it with a standard that we all agree upon. The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. Temperature of an object is measured with an instrument called thermometer. Unit of temperature. Now you see the temperature. We have just discussed that hotness or coldness and object is relative. देखो हम डिस्कस किए थे कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो ऑब्जेक्ट का है वो रिलेटिव होता है. उसको मेजर करना है तो हॉटनेस या और कोल्डनेस का मेजरमेंट करना है तो हमें उसका स्टैंडर्ड यूनिट से ही पता चलता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन ए चूजन स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर. तो हॉटनेस और कोल्डनेस मापने के लिए एक स्केल को चूज किया जाता है जिसे टेम्परेचर कहते हैं. नाउ यू विल सी द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. The SI unit of temperature is Kelvin K. Commonly used units of temperature are degree Celsius, degree C, and degree Fahrenheit, degree F. Thermometer.
Now you see the units of temperature. Units के क्या है टेम्परेचर के यूनिट्स, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन. और कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस मीन्स C and degree Fahrenheit means F